बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स की मैंने एक सीरीज़ शुरू की है MCQs की। तो आज उस सिलसिले की तीसरी वीडियो है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला MCQs है, वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड वाया डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग को दोस्तों डिमांड सेगमेंटेशन भी कहते हैं। और बी नंबर पे है लॉजिकल पेजिंग, सी नंबर पे स्ट्रक्चरल वे, डी नंबर पे है सिंपल डिवीजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड वाया डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है, एनी प्रोग्राम नो मैटर हाउ स्मॉल occupies an entire partition, this is called dash fragmentation, prior fragmentation, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है, अ प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट। नंबर ए पे है थ्रेशिंग, नंबर बी पे है कंपैक्शन, नंबर सी पे है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, नंबर डी पे है डिवीजन। करेक्ट ऑप्शन है इसका नंबर ए, thrashing. A process is busy swapping pages in and out, thrashing. Dash refer to the logical structuring of records, physical organization, logical organization, structural organization, file organization. Correct option है इसका ऑप्शन डी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन refers to the logical structuring of records. Next है, the user can load and execute a program but cannot copy it. This process is called execution, appending, reading, updating. Correct option है इसका ऑप्शन ए, execution. The user can load and execute a program but cannot copy it. This process is called execution. Next है, in a spreadsheet letters are used to represent dash, cells, rows, columns, blocks. Correct option है ऑप्शन सी, columns. In a spreadsheet, letters are used to represent columns, or columns are represented by a column in spreadsheet are represented by letters. Next है, which of the following isn't a part of a spreadsheet? Row number, column number, column letter, cell address. Correct option है इसमें ऑप्शन बी, column number. Which of the following isn't part of a spreadsheet? column number, क्योंकि column letter से ही represent होते हैं spreadsheet में, और row जो होते हैं वो number से represent होते हैं spreadsheet में, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, कॉलम नंबर। नेक्स्ट है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ GUI इज आइकॉन्स, लिंक्स, विंडो मैनेजर, सेल्स। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विंडो मैनेजर। नेक्स्ट है, फाइल्स दैट मेंटेन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल सिस्टम इज डिस्क्रिप्टर्स, डायरेक्टरीज, मॉडिफायर्स, रिलेटिव फाइल्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डायरेक्टरीज। फाइल दैट मेंटेन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल सिस्टम इज डायरेक्टरीज। नेक्स्ट है, फाइल इन विच यूजर स्टोर इंफॉर्मेशन इज इनफो फाइल, ऑर्डिनरी फाइल्स, स्पेशल फाइल्स, कॉम्प्लेक्स फाइल। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑर्डिनरी फाइल्स। नेक्स्ट है, serial instruction execution simultaneously in dash processing, parallel processing, serial processing, multitasking. Correct option है इसमें ऑप्शन सी, serial processing. Several instructions execution simultaneously in serial processing. Next है, a characteristics of an entity is relation, attribute, parameter, constraint. Correct option है इसका ऑप्शन बी, attribute. Characteristics of an entity is attribute.
नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डैश प्लस रिलेशनशिप, डेटा, एट्रीब्यूट्स, एंटिटी, कॉन्स्ट्रेंट। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंटिटी प्लस रिलेशनशिप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, फिजिकल, लॉजिकल, यूजर, व्यू। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यूजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है यूजर। दोस्तों डेटाबेस में जो लेवल होते हैं वो तीन ही होते हैं, आपके पास लॉजिकल, फिजिकल और व्यू, ये लेवल होता है। यूज़र कोई लेवल नहीं होता डेटाबेस में। डेटाबेस में टोटल जो लेवल होते हैं वो 3 होते हैं, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटाबेस इज ओनली टोटली 3। नेक्स्ट है अ लेवल दैट डिस्क्राइब हाउ अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इज फिजिकल, लॉजिकल, यूज़र, व्यू। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए फिजिकल। अ लेवल दैट डिस्क्राइब हाउ अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इज कॉल्ड फिजिकल। नेक्स्ट है द एक्चुअल कंटेंट इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज स्कीमा, अट्रीब्यूट, पैरामीटर, इंस्टेंस। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी इंस्टेंस। द एक्चुअल कंटेंट इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इंस्टेंस। नेक्स्ट है SQL is relational model, SQL is network model, SQL is IMS model, SQL is hierarchical model। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए SQL structure query language and database is relational model based on relation। next है a term that defines the direction of a flow of information between devices, interconnectivity, इंट्राकनेक्टिविटी, ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ट्रांसमिशन मोड। अ टर्म दैट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस इज ट्रांसमिशन मोड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड, फिजिकल, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फिजिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड इज अ फिजिकल। क्योंकि हमारे पास दोस्तों ट्रांसमिशन मोड जो है वो या तो सिंप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में हम एक तरह से एक तरफ से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव नहीं करते। हाफ डुप्लेक्स में हम दोनों तरफ से ट्रांसमिट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, लेकिन वन एट अ टाइम, एक टाइम में या तो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं। एक टाइम पे दोनों प्रोसेस नहीं होते, उससे एक ही होता है। और फुल डुप्लेक्स में हम ट्रांसमिट और रिसीव एक ही टाइम पे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है फायर अलार्म्स आर बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट, नेटवर्क, एनालॉग, मल्टीपल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एनालॉग।